आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मेरी आजमाइश की गई है पूरे इंसानों में से, अंबिया में से, amongst the prophets, I am the one who has been mostly severely tested and tried. And he said then after that is Anbiya, other Anbiya, then actually the people who are close to Anbiya like Ahlul Bayt, their families, as you saw the test of Sayyidina Imam Hussein was such that actually parallel cannot be found. Sayyidina Ibrahim alayhi salam was tested through the ordering the slaughtering of the son. But that did not happen. At the end, Allah subhanahu wa ta'ala saved him. But Sayyidina Imam Hussein radiallahu anhu, he had to go through not one son, but many of slaughtering of many of son in front of his eyes. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most tried and tested person. So in his life is the summary of the life of all the prophets and all the messengers. We also at our baby level, our low level, wherever our iman is, we also are being tested. No one is free from that. Once you are born on this face of the earth, that part starts. Now, the successful one is the one who knows how to react rightly, and who also know why a person is being tested and what could be the reason so that he can or she can react rightly. तो सब हस्तियों अंबिया अलैहिस्सलाम पाक हस्तियों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आजमाइश हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, आपने खुद फरमाया। फिर उसके बाद अंबिया रसूल अंबिया की अलैहिमुस्सलाम, उसके बाद अहले बैत कराम सहाबा कराम रिज़वान अजमाइन की, और फिर उसके बाद औलिया कराम। तो हमारी भी अपने अपने दर्जे में हो रही है। अब आप भी आजमाइश में होंगे। ये हो ही नहीं सकता, पैदा हुए तो आजमाइश में ना, ये हो ही नहीं सकता। आप में से कोई एक बंदा भी इस किसी न किसी आजमाइश में ना हो। द वन हु सेज, जो ये कहता है मैं अब ठीक हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मेरी आजमाइश नहीं हो रही, उसकी सबसे ज्यादा आजमाइश हो रही है। द पर्सन सेज नो आई एम फाइन, my finances is fine, my family is fine, alhamdulillah, everything. His test is even at a more severe level, because blessing, the test of blessing is more subtler and more severe than the test of actually problems and difficulties. जो नेमत की आजमाइश होती है वो मुसीबत की आजमाइश से भी सख्त होती है। मुसीबत की आजमाइश में तो बड़े बड़े गुनाहगार अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, वो नेमत में बड़े बड़े नेकोकार अल्लाह की तरफ से मुंह फेर लेते हैं।